Hello students, I am teaching you chemistry paper 3, that is the analytical chemistry of SYBSc, and this is our semester 4, and this is the part 4 lecture of unit 2nd, that is instrumental methods 2nd. So in last lecture we have completed the glass electrode and primary reference electrode and secondary reference electrodes. So now we have to start a new topic, that is the basic principles of potentiometric titrations. So how both the potentiometric titration are carried out, how the working of titration, and what are the advantages, disadvantages. So now we have to study all these things. So in potentiometric titration, the potential of suitable cell is measured as a function of the volume of titrant added. मतलब क्या होगा? Potentiometric titration क्या है? The potential of suitable cell is measured as a function of volume of titrant. मतलब पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है बाय एडिंग वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट. तो टाइट्रेंट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करते जाएंगे उस सेल का. So the cell will involve an indicator electrode which is reversible to the ion being titrated. तो सेल इन्वॉल्व क्या होता है? सेल में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो कि रिवर्सिबल होता है, आयंस जो भी H+ आयंस वगैरह है. As the titration proceeds and the concentration of ion being titrated changes, the potential of the electrode will also change. So titration जैसे जैसे प्रोसीड होता जाएगा, so concentration of ions also changes. So the potential of indicator electrode also changes. Since the other electrode, namely the reference electrode, is of constant potential, the potential of the cell will also reflect this change. दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड. So reference electrode is of constant potential. So so क्या करता है? उसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं. उस मतलब एज अ रेफरेंस करके वो कितने इंक्रीज डिक्रीज हो रहे. In any titration, the ion being titrated shows the large changes in concentration around the equivalence point. So this will produce a large change in the potential of the indicator electrode and the potential of the cell around the equivalence point for a small increments of the titrant added. So क्या होता है? In any titration, ions क्या होते हैं? Shows large changes in concentration, but around the equivalence point. Equivalence point के around में large changes of concentration दिखता है titration का. So this will produce large changes in the potential. So potential में भी changes दिखता है उसकी वजह से of the indicator electrode and the potential of the cell around the equivalence point for a small increment of the titrant added. मतलब जैसे जैसे उसके चेंजेस हमें लार्ज चेंजेस कम होते ज्यादा होते जाएंगे, so we have to stop the addition of titrant, because around that equivalence point we have to add a small increment of titrant. So we can easily find out equivalence point. So thus the initially the variation of potential of the cell with addition of titrant will be gradual and the equivalence point will be shown by large change in potential. So initially क्या variation of potential cell with addition of titrant will be gradual, मतलब थोड़ा सा starting में gradual थोड़ा थोड़ा हो जाता है, and the equivalence point will be shown by large change in potential. जब उसका equivalence point आता है तो उसमें large changes दिखते हैं, मतलब ज्यादा changes आ जाते हैं. The neutralization of strong acid HCl by strong base NaOH is studied by potentiometric titration using quinhydron and calomel electrodes. So neutralization कैसे? strong acid HCl का and strong base NaOH का हम स्टडी कर सकते हैं by potentiometric titration using quinhydron and calomel electrodes. So quinhydron और calomel electrode का यूज करके हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस स्टडी करते हैं. So procedure for carrying out potentiometric titration. So above figure shows the simple setup used for potentiometric titration of strong acid against strong base. So this is the diagram of potentiometric titration. So potentiometric titration is having a
this solution, acid solution with saturated quinhydron. Then this one is the platinum wire, this one positive charge, the platinum have positive charge, burette of the titrant added. This is the burette of titrant added. Then this is the saturated KCl salt bridge. This is the salt bridge. So salt bridge is there. So this one is the deep type of calomel electrode, and this is the stirrer, and this one is the saturated KCl solution. So this one is the setup of the potentiometric titration. So what is the procedure of to carry out potentiometric titration? So initially large increment of the titrant NaOH are added 1 to 2 ml, and after each addition E cell is measured. मतलब इनिशियली हम 1 to 2 ml लार्ज क्वांटिटी में एक साथ ऐड कर सकते हैं, बट आफ्टर ईच एडिशन हमको ई सेल मेजर्ड करना है 1 to 2 ml ऐड करने के बाद. So equivalence point is characterized by a large and rapid changes in the potential of the cell setup. तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? लार्ज एंड रैपिड चेंजेस इन द पोटेंशियल ऑफ द सेल सेटअप. तो लार्ज चेंजेस होते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब आता है तब. देयरफॉर नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ द टाइट्रेंट आर एडेड. So that is why जब equivalence point is nearer, then we are adding only 0.1 to 0.05 ml solutions from titrant from burette. After each addition of the titrant, the solution is stirred, allowing the electrode to reach equilibrium. So after each addition of titrant, मतलब हर एक titrant के addition के बाद solution को क्या करना है? We have to stir, allowing to electrode to reach equilibrium. Up to the equilibrium जब तक आता है उसका तब तक stir करते रहने का. The plot of E cell versus volume of a titrant shows a sigmoid or S-shaped curve. Hence it becomes necessary to record as many points as possible around the equivalence point of the titration. So E cell versus वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का क्या प्लॉट कैसे आता है? सिग्मोइड या तो यस शेप करवाता है. तो इट इज नेसेसरी हो जाता है कि टू रिकॉर्ड मेनी पॉइंट एज पॉसिबल अराउंड द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. सो जितने भी ज्यादा पॉइंट मिलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट पे उतने हमें लेने हैं. So the equivalence point of a titration is determined from any one of the following graphs. So which are these graphs? So first one is the E cell versus V, that is volume of titrant added. Then second one is the del E by del V versus V, that is volume of titrant added. And then third one is the del square E by del V square versus V, that is volume of titrant added. So graphical methods of determining the equivalence point in potentiometric titration of strong acid against strong base, that is HCl versus NaOH. So graphically हम क्या equivalence point find out कर सकते हैं strong acid और strong base का, that is example हम लेंगे उसका HCl versus NaOH. So we have to find, irrespective of the type of titration, the equivalence point of a potentiometric titration is always determined graphically. Each graph has its unique characteristic, advantage and disadvantage. मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ टाइट्रेशन, मतलब उसके टाइप ऑफ टाइट्रेशन कौन सा टाइप है उस पर क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन डिटरमाइंड बट बाय ग्राफिकली. और ईच ग्राफ हैज इट्स यूनिक कैरेक्टर्स, मतलब कि हर एक ग्राफ का उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेजेस ये सभी अलग अलग होते हैं, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस. सो दैट इज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन or solution we are using. So first one is the from the graph of E cell versus volume of the titrant NaOH. So this is the diagram of E cell versus volume of titrant added.
due to logarithmic relationship between concentration of ion being titrated and E cell. So logarithmic relation between concentration of ion titrated and E cell. The graph of the E cell versus volume of the titrant is always S shape. मतलब ये S shape होता है always, और a sigmoid curve, या तो sigmoid curve होता है. In given, I am giving this in figure. So the nature and the shape of the curve depends on the nature of the system. So उसका nature और उसका shape of the curve किस पर डिपेंड करता है? उसके nature of the system पर. So the equivalence point lies on the steep portion of the curve. So equivalence point कहाँ पर उस लाई करता है? उसके steep portion में, मतलब ये वाला portion, ये वाला जो portion है अपना, ये that is the steep portion. So the equivalence point lies on the steep portion of the curve. The curve will have a point of inflection on the steep part of the curve. So वहां पर क्या है? Point of inflection होते हैं on steep part, on steep portion. At this point, the tangent drawn to the curve is perpendicular to the x-axis. So perpendicular, ये हमने perpendicular लिया ये curve. So ये क्या है? x-axis को perpendicular लिया, तो इसको हम क्या करेंगे? perpendicular when the curve is symmetrical. जब curve symmetrical रहा तो हम उनके point of inflection के mid point से हम एक tangent x-axis पर draw करेंगे. So जब curve is symmetrical, the point of the steep portion of the curve, the point of inflection and the equivalence point will coincide. So point of inflection और equivalence point ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? फिर coincide हो जाएंगे whenever curve is symmetrical. Hence the simplest method of determining the equivalence point will be to determine the midpoint of the steep portion of the curve. So simple method क्या है? Determine the equivalence point. Determine first midpoint of the steep portion of the curve. This is taken as the equivalence point and the volume corresponding to this point as a V equivalence. However, if the curve is not symmetrical, then the above method will not give correct results. So equivalence point and the volume corresponding to this point as a V equivalence. But if the curve is not symmetrical, मतलब अगर curve symmetrical नहीं रही, तो then the above method will not give correct results. So in this case, some geometrical constructions are adapted to determine the equivalence point accurately. So उसके लिए हमें कुछ geometrical constructions adopt करने पड़ते हैं. So we can determine the equivalence point from that geometrical constructions. So from second one is from the graph of del E by del V versus volume of the titrant added. So this is the graph of del E by del V versus volume of titrant added. So S-shaped curve of the cell as versus V shows steep portion. In this region of the curve, the slope of the curve shows rapid changes. So S-shaped curve E cell versus V shows क्या करता है? Steep portion, जो हमने पहले ग्राफ में देखा है. In this region, the slope of the curve shows rapid changes, और rapid changes भी दिखाता है. The slope increases, reaches a maximum and then start decreasing. पहले slope increase हो रहा है, reaches maximum, मतलब यहाँ पर कैसे हो रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हो रहा है, ये पॉइंट लास्ट का पॉइंट तक, ये मतलब ये पॉइंट, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग. उसके बाद में वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब ये यहाँ से ऐसे नीचे जाने लगता है. सो द स्लोप ऑफ द कर्व इज डेल ई बाय डेल वी. तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या है? एज अ कंसीडर करेंगे डेल ई बाय डेल वी. Hence plot of the del E by del V versus volume of the titrant shows two portions. That is the ascending portion representing the increase in the del E by del V. मतलब ये ascending portion
ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज इन del E by del V. As it reaches the maximum and the descending portion is del E by del V decreases. मतलब ये पोर्शन, ये सेकेंड वाला जो है, ये वाला, ये पोर्शन, so a descending portion as a del E by del V decreases. At the equivalence point the slope will be maximum. Equivalence point पे slope क्या होता है, maximum होता है, and it will be point of inflection if the curve is symmetrical. Equivalence point पे slope maximum होता है and it will be point of inflection if the curve is symmetrical. Curve is symmetrical रही तो ही उसका point of inflection as a consider करते हैं हम उसको. The ascending and descending portion of the plot are extrapolated. The point of intersection of the two is determined. This will be the point corresponding to maximum values del E by del V, and hence will or respond to the equivalence point. So ascending and descending plots are extrapolated. एक्स्ट्राप्लोटेड करते हैं मतलब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्राप्लोटेड इसके आगे जहाँ पर यहाँ तक गए हैं और इसको भी यहाँ से यहाँ पर किया है. So extrapolated. The point of intersection of the two is determined. This will be the point corresponding to maximum value. तो उसका point of intersection मतलब दोनों कहाँ पर एक हो रहे, coincide हो रहे, तो वो होगा आपका this point corresponding to maximum value होगी तो वहां पर del E by del V की, and hence will or respond to the equivalence point. So वो क्या कंसिडर करेंगे हम, रिस्पॉन्ड करेंगे उसको एज अ इक्विवेलेंस पॉइंट. सो ये यहाँ पर हमने उसका इक्विवेलेंस पॉइंट लिया. तो ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद दिस वन इक्विवेलेंस पॉइंट. In many cases, for the actual titration curve, the ascending and descending portions are not as symmetrical as shown in figure. So in many cases, ascending and descending portions are not symmetrical, जैसे कि पहले फिगर में हमने देखा है. The actual situation in this case is similar to above figure number 2. तो इस फिगर में जो कभी कभी सिमेट्रिकल मतलब कोइंसाइड नहीं होते हो एक दूसरे को, सो पैरेलल में ही रहते. हेंस अ डिफरेंट मेथड विल हैव टू बी अडॉप्टेड टू गेट द EV equivalence from the actual plot of del E by del V versus volume of titrant added. In such cases, the descending portion which runs parallel is extended. So ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, डिसेंडिंग पोर्शन which runs parallel वो क्या है, हमें एक्सटेंडेड करना है. From the middle region of the two extended portion, a third line parallel to them is drawn. So descending portion में क्या करते हैं हम, मतलब ये यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स्ट्राप्लोटेड किया है डिसेंडिंग पोर्शन का. तो ये आगे ऐसे ही एक्स्ट्राप्लोटेड किया हमने. तो फ्रॉम द मिडल रीजन ऑफ द टू एक्सटेंडेड पोर्शन मतलब दोनों भी एक्सटेंड करके हमने इन दोनों के बीच में एक ये लाइन ड्रॉ की है. दिस लाइन वी हैव ड्रॉइंग, that is the third line parallel to them is drawn. The volume corresponding to this is the equivalence volume. So जो भी इसका पैरेलल का लाइन मिडल की जो हमने की है, तो वो जहां पर भी एक्स एक्सिस को टच हो रही है, that is V equivalent, that is the equivalence point. So this is the second graph. From the third one is from the graph of del square E by del V square versus volume of the titrant added, that is NaOH. This is the diagram for del square E by del V square versus volume of titrant added, and this one is the hyperbolas 1, 2, this one 3, and this one 4. This one is the from 0 below the 0 negative, and here above the del square E by del V square is 0 above the positives. At the equivalence point, del E by del V value
इज मैक्सिमम, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये इसका इक्विवेलेंस पॉइंट है। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट del E by del V value is maximum. Theoretically it should be infinite. As हम consider करते theoretically infinite. Using calculus, it can be shown that if del E by del V is maximum at the equivalence point, then its first derivative, that is del square E by del V square, will be 0 at the equivalence point. So equivalence point, using calculus, it can be shown that if del E by del V is maximum at the equivalence point, then its first derivative del by v square will be 0। मतलब पहले अगर मैक्सिमम इक्विवेलेंस पॉइंट हमने कंसीडर किया तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव del square E by del v square क्या होता है, 0 होता है। So this method is very accurate method for locating equivalence point of titration. तो ये मेथड क्या है, very accurate method for locating equivalence point of titration. In this method, the value of del square E by del V square are plotted against the volume of titrant added. So उसमें क्या है, del square E by del V square plotted against volume of titrant added. The method is based on fact that the point at which the first derivative is maximum. ये मेथड किस पर बेस्ड है, उसका पॉइंट कौन सी फैक्ट पर, पॉइंट एट विच फर्स्ट डेरिवेटिव इज मैक्सिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम कंसीडर करते हैं हम उसी में। So at the same point the second derivative is 0, therefore at equivalence del square by del v square is equal to 0। so उसी सेम पॉइंट पे हमने अगर सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो वो 0 होता है, therefore equivalence point also del square E by del v square also 0। The values of del square E by del v square are calculated as a numerical difference between two successive values of del E by del v. The graph consists of two set del square E by del v square values. So values del square by del v square calculated as numerical difference between two successive values. So numerical difference between two successive values of del E by del v, दोनों के numerical difference से हमें पता चलेगा। One is with positive values of del square E by del v square and second is with negative values of del square E by del v square। मतलब ये जो हमने ऊपर लिया है ये पॉइंट A, that is the positive one, पॉजिटिव वैल्यूज क्यों बोल रहे हैं हम, यहाँ पर पॉजिटिव है। So positive one with positive values of del square E by del v square and second is with negative values, that is point B. So here is negative, so this one is the negative point B. The maximum positive values of del square E by del v square is joined with maximum negative values of del square E by del v square। मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव डेल और मैक्सिमम नेगेटिव दोनों A और B पॉइंट को we have to joined। So the line cuts the volume axis at which del square E by del v square is 0, which gives VEQ, that is V equivalence point। So दोनों का जहां पर ज्वाइंट होते वक्त जहां एक्स एक्सिस पर वो ज्वाइंट हो रहे हैं दोनों भी, that is our true equivalence point। So advantages and limitations of potentiometric titration. So which are the advantages for potentiometric titration? So first one, whenever an indicator electrode is available, the titration can be carried out potentiometrically for that particular species, ion or molecule। मतलब जब भी हमको कोई इंडिकेटर इलेक्ट्रोड अवेलेबल होगा तो टाइट्रेशन हम पोटेंशियोमेट्रिकली कैरिड आउट करेंगे, बट पर्टिकुलर स्पेसीज और आयन्स या तो मॉलिक्यूल्स का होता है। फिर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमने पर्टिकुलर स्पीसीज और आयन और मॉलिक्यूल ही फाइंड आउट करता है। ऑल द कैटेगरीज ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, मोनोबेसिक डाइबेसिक एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड कैन बी कैरिड आउट। सो हर एक एसिड बेस की टाइट्रेशन की कैटेगरीज, दैट इज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, मोनोबेसिक डाइबेसिक, मिक्सचर ऑफ एसिड भी रहा तो भी it can be carried out by potentiometric titration। even acid based titration in non aqueous media can be performed। मतलब अगर acid based titration non aqueous मीडिया ही नहीं रहा उसमें तो भी वो परफॉर्म करता है by potentiometric titration, either with the help of metal ion electrode
or metal insoluble salt type of electrode, the titration can be carried out for precipitation titration. So with the help of metal ion इलेक्ट्रोड या तो मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड टाइट्रेशन हम कैरिड आउट कर सकते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. With mercury acting as an indicator electrode, complex geometric titration, if not frequently, can be carried out when needed. So mercury acting as an indicator electrode in complex geometric titrations, if not frequently, can be carried out when needed. Many redox systems can be titrated potentiometrically. A mixture of two reductants with the same oxidant can also be employed. So many redox systems can be titrated potentiometrically. That means mixture of two reductants with same oxidant can also be employed. So limitation. What are the limitations? The only disadvantage is it is time consuming and laborious. It requires a large number of observations and the endpoint obtained graphically. So इसमें क्या disadvantage है? It is time consuming and laborious and it is having a large number of observation. हमको ज़्यादा observation करने पड़ते हैं यहाँ पर and end point जो भी आएगा वो graphical ही आएगा. Without graph we can not find out this titration result. So applications of potentiometric titration in acid base titration. So क्या है इसके potentiometric titration के application? So we have to find out, we have to study to determine the total alkalinity and carbonate content in a sea water. तो sea water में alkalinity कितनी है उतनी alkaline कितना है and carbonate content कितना है we can find out by this potentiometric titration. To determine the phosphoric acid content in aerated drinks. So phosphoric acid का content कितना है aerated drinks में, मतलब हम जो भी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसमें phosphoric acid का कितना है कंटेंट वो डिटरमाइन करने के लिए we can using a potentiometric titration. To determine acetic acid content in commercial vinegar sample. So acetic acid का कंटेंट हमें कमर्शियल विनेगर में कितना है वो हमें डिटरमाइन करने के लिए भी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं. जैसे कि हम लेबोरेटरी में भी विनेगर से एसिटिक एसिड का फाइंड आउट कंटेंट कितना है वो फाइंड आउट करते हैं. एंड ऑल्सो इन विनेगर इज वी आर यूजिंग इन चाइनीज. To determine dissociation constant of dibasic and tribasic acids. So dissociation constant of dibasic और tribasic acids का भी हम इससे बायोपोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. To estimate small changes of carbon dioxide or oxygen content in the natural waters. So हमें small changes भी, that is the changes of carbon dioxide और oxygen content natural water में फाइंड आउट करना है तो हम we can find out from potentiometric titration. So these all are the potentiometric titration. We have completed all the things of potentiometric titration. Thank you students.